day one I always wanted a Punjabi person and मेरे वैसे वो था कि ऐसे लंबा चौड़ा होना चाहिए and height अच्छी होनी चाहिए, पंजाबी होना चाहिए and but when I realized that I am having a very good friend like him and I can be with him, वैसा कुछ रहा नहीं. So it was like I was very comfortable with him. I saw this very pretty girl, just walking up in the class, and the whole classroom was, kind of filled, and there were only a few seats vacant besides me. So, as per her, habit that I've come to know for the past 3 years of always being late. So even that day she was a little bit late by around 10 to 15 minutes. So she just happened to come and sit beside me. So being a shy guy, I was hesitant in speaking to her initially on that day. But as the time went, during that day we got introduced, we spoke to each other, we exchanged numbers, and that's how we started our conversation. हमेशा कहा करता था कि मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कोई भाई बहन नहीं है. तो हम लोग भी ऐसे उसको कहते थे कि ठीक है, आपको भाई बहन नहीं है तो आप अपना लाइफ पार्टनर ऐसे टाइप का ढूंढिए कि जो हमारी बेटी बने और हमारे में जो कमी है ट्रायंगल का स्क्वायर बने. Give a little time to me, we'll burn this out, we'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, oh give me love. My mind, oh give me love. My mind, oh give me love. For any girl, it is very important for her to make sure that the guy she's choosing should be appropriate for her. At the same time, his family should be appropriate. So when I met his family, I found that they are more of my parents, like, so it's like I can be with them, sort of a thing. I never got a feeling that I'm going into some opposite person's home and I'm going to stay there. I can share whatever I want with his dad or his mom. मैंने उसके फादर को यही देखा है. अपने लेवल पे मेरा जजमेंट यही है कि जिस हिसाब से वो रोमा से बात करते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि उनको एक बेटी की मतलब कमी खल रही है. उसी लेवल पे वो सोचते हैं कि मेरे घर में एक बेटी आई है, ना के बहू आई है. और जहाँ तक मदर की बात है, मदर भी उसी लेवल पे उतनी सुशील है, उतनी कोमल है, उतनी सॉफ्ट स्पोकन है कि जो मैंने अपने माइंड पे मैंने मतलब जजमेंट किया है. होप दैट आई एम राइट. It's a brotherly feeling that I do not want her to leave our house and all. And I still say her कि टॉम देख ले, तू चली जाएगी तो फिर बाद में तेरे को ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा. But at the end of the day, yes, Pritesh is also a good guy. His family is very good. All of them are caring, they respect her. And I think at the end of the day, what matters is love and respect to whichever home you go. The one thing that caught me about her was her thoughts about staying in a joint family and kind of being very close to people around her family, and also she wanted something like that to, in case of she'll get married to the person. So that's what something which really kind of pulled me towards her. बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए, मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये
रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं। पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। When he proposed, I asked him very frankly whether he is very serious or he just wants to give it a shot. So he was like, no, he is very serious about things. So I was like, okay, if that is the case, give me my time and then I'll consider this. When we spent time together in college, we realized that we are two opposite personalities. तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। इश्क संग लगी मैं रंग विच रंगी, ये दिल तुझे रब से ही मंगदा। न जानू मुझे कब तू कैसे तू मिलेगा, ये जानू बस तू मुझे मिलेगा मिलेगा। मैं संग तेरे रहूं ना प्यार मेरा तो रहेगा सदा। I know that they are very good people and they'll keep me happy, but for a girl everything changes, especially you have a habit of being at your own place, seeing your mom the first person in your life, because I always sleep with mom, so things are definitely going to change drastically. I don't know how am I going to adjust, but I have to and I will, and not because it's an obligation, but it's a start of the new life. One message that I would like to give their parents is that she would definitely be very, very happy over here. So it's a triplet right now, so we'll be 4 people. So we are very excited to, you know, have her as a part of our family. बाबुल साडा चिड़ियां दा चंबा, असा उड़ जाना वे, असा उड़ जाना वे। यादां बचपन दियां यादां नू छड़ जाना वे, असा छड़ जाना वे। बाबुल दूर परदेस दूर जाना, माए देंदी रवि तू दुआवां। नार्वेकर फैमिली से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके घर में रोमा एज ए डॉटर आ रही है, तो उसके हाथ से अगर कोई गलती होती तो आप उसको समझा बुझा कर उसको ठीक कर सकते हैं, अपनी अच्छी हैप्पी लाइफ रखना। I hope you have a beautiful and happy married life, and we as family, the Narang family and Narvekar family would always continue to support both of you. त्याच्यावर भरपूर प्रेम होतं आजोबांचं, आणि त्याला आता पण जाणवते की माझं आपल्याकडचं कोणीच नाही, म्हणजे माझे आजी आजोबा पण नाही आणि पप्पांकडचं पण कोणी नाही, तुझ्याकडचं पण कोणी नाही, पण आता रोमाचे आजी आजोबा आहेत त्याच्यामुळे तो जरा खुश आहे, म्हणजे तेवढं तरी त्या लोकांचे आशीर्वाद त्याला मिळाले, असं दोघांना मिळाले ते आम्हाला फार बरं वाटतं असं. आणि रोमा पण त्याला भरपूर ॲडजस्ट करते आणि चांगलं समजून घेतात दोघं एकमेकांना. नारंग फैमिली को कोई ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसे मान लीजिए कि उन्होंने अपने गोद की जो अपनी बेटी है हमारे गोद में दे दी. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार,
अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा